Assalamu alaikum, my dear students of class KG. I hope you all are fine and doing well at home. I am your teacher Miss Sanya and I am going to teach you GK, so take out your GK syllabus. So students, today we will revise the question number 7. What is the name of your country? What is the name of your country? Pakistan. What is the name of your country? Pakistan. Okay students, besides that you should also know that what is meant by a country. एक country किसे कहते हैं? So a country is made up of two things, the land and the people who live there. So when we learn about the country, we should also learn about its cities, and we also learn about the land. So the land includes its mountain ranges, its plains, its rivers, its lakes, and its deserts. So there are many countries in this world and each country has all these components. So now you have to tell the name of your country. So what is the name of your country? Pakistan. What is the name of your country? Pakistan. I hope you have understood. Okay students, our second lesson is Islamiat. So take out your Islamiat syllabus. Islamiat का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. अज़ान हमें किस काम के लिए बुलाती है? अज़ान हमें किस काम के लिए बुलाती है? नमाज पढ़ने के लिए. अज़ान हमें किस काम के लिए बुलाती है? नमाज पढ़ने के लिए. आप सबको पता है बच्चों कि अज़ान किसे कहते हैं? अज़ान ऊंची आवाज़ में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने को कहते हैं. ठीक है, तो मस्जिद में जब अज़ान दी जाती है तो उसे सुनकर तमाम मुसलमान मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं. ठीक है, तो अज़ान हमें किस काम के लिए बुलाती है? नमाज़ पढ़ने के लिए. अज़ान हमें किस काम के लिए बुलाती है? नमाज़ पढ़ने के लिए. आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करना है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.